Hello students, the question is an air bubble of radius 1 mm is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid having surface tension 0.095 joule per meter square and density 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube. The difference between pressure inside the bubble and the atmospheric pressure is, so we have to find out the difference between the air bubble pressure and the atmospheric pressure. So, the situation is something like this, which I have drawn in the figure. So, there is a liquid here, and above the surface of the liquid there is atmosphere, and inside the liquid there is an air bubble. Now, the air bubble is having a location of 20 centimeter below the surface, and we have to find out the difference between the inside pressure. Suppose this is the air bubble, surrounding here is the liquid. So, there is some inside pressure which exerts on the wall of the bubble, and just outside the surface there is also pressure, and we have the atmospheric pressure. So, we have to find out the difference between the inside pressure, inside means the pressure inside the air bubble, and the atmospheric pressure. For example, we call the atmospheric pressure as P naught. So, we have to find out this difference, P input minus P different, P naught, P input minus P naught. We have to find out this difference basically. So, first of all, let us calculate the pressure just above, just outside the air bubble. So, pressure just outside the air bubble, just outside the air bubble is given by P naught plus rho g h. We know that as we go deeper and deeper in the liquid, the pressure goes up, the pressure goes increasing by the height of the liquid column above it. So, P equals to P naught plus rho g h. By this formula, we can calculate the pressure outside the bubble. Now, we know that the excess pressure, that means the inside pressure minus just outside the bubble pressure is given by 2 times T upon R, where T is the surface tension. Now, it is important to note here that for the air bubble, for this particular air bubble, one side is air, and one side is liquid. So, there is only crossing of one interface, that is the crossing from the liquid to air. So, that is why we have taken 2T by R. Whereas, in the case of a soap bubble, the outside is air, the inside is air, and the layer is of liquid. So, the crossing is 2 times, from air to liquid, then liquid to air. So, that is why in that particular case we have to use the formula 4T upon R. But for this particular case, in this particular problem, the outside medium is the liquid, and there is a crossing of only one surface at a time. So, that is why we have taken 2T upon R. Now, the outside pressure which we have written over here as equation number 1, we can put this value of outside pressure in the equation number 2. So, we can say that P input minus, we have to put this value of P out from equation 1 in equation 2. So, this is P naught plus rho g h, and this is equal to 2 times T upon R. Now, in this way we can rearrange, first of all we can rearrange this equation as P input minus P naught is equal to 2 times T upon R plus rho g h. Now, this we can calculate here in this manner. So, P input minus P naught, which we have to calculate in the given problem, in this particular problem. So, this is given by 2 T upon R. So, it is 2 multiplied by the tension which is given as 0.095 upon the radius is given as 1 mm. So, we have to convert it into meter. So, 10 to the power minus 3 meters plus rho, which is the density. Density is given as 1000 kilogram per meter cube, multiplied by g, the value of g is given as 10, and h is the height of the bubble or the depth of the bubble from the surface.
So in this way, this is 20 centimeter. When we convert it into meter, it becomes 0.2. So 0.2. So after solving this, the first term becomes 2 multiplied by 95 plus the second term becomes, this becomes 2000, this becomes 2000. So in this way, we get this value as 190 plus 2000. So this becomes 2190. So this value becomes 2190 Newton per meter square. So 2190 Newton per meter square is the final answer. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि एक एयर बबल है जिसकी रेडियस 1 mm है, वो देखा जाता है किसी लिक्विड के अंदर 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे, जो उसकी सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पे लिक्विड की सरफेस टेंशन दे रखी है 0.095 जूल पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी दे रखी है 1000 या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो बबल के इनसाइड जो प्रेशर है उसका डिफरेंस निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है, सबसे पहला कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है कि जो जस्ट आउटसाइड द बबल जो प्रेशर होगा वो होगा P0 प्लस रो जी एच। इस तरह से जस्ट आउटसाइड द सरफेस हम प्रेशर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर को हम बराबर रख देते हैं 2T/R के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा आउटसाइड प्रेशर से, जब ये इस तरीके की शेप जो है फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे 2T/R लेने का पर्पज़ ये है, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन मीडियम हो रहा है वो एक ही टाइम हो रहा है, वन टाइम हो रहा है ओनली। लिक्विड से एयर की फॉर्म में चेंज हो रहा है क्योंकि आउटसाइड लिक्विड है और जो ट्रांजिशन है लिक्विड से एयर की तरफ है। वेयर एज अगर कोई सो बबल की प्रॉब्लम आती है जिसमें कि आउटसाइड भी एयर हो और इनसाइड भी एयर हो और लिक्विड का जो है वो एक तरीके से बबल फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे फिर इंटरफेस दो टाइम क्रॉस होती है, एयर से लिक्विड और लिक्विड से फिर एयर। तो वहाँ पे फिर हम फॉर्मूला 4T/R यूज़ करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है। तो P इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R। यहाँ पे पी आउट जो है इक्वेशन 1 की हेल्प से, यानी P0 प्लस रो जी एच वैल्यू हम पुट करेंगे। तो P इनपुट माइनस ब्रैकेट P0 प्लस रो जी एच इक्वल्स टू 2T/R। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, P इनपुट माइनस P0 और माइनस रो जी एच को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2T/R प्लस रो जी एच। रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.095 जो कि कैपिटल टी यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, अपॉन आर जो कि रेडियस है इस एयर बबल की, तो उसको हम मिलीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर्स, प्लस रो जी एच, रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब जिसको हम 1000 कह सकते हैं। जी की वैल्यू हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, उससे पुट करेंगे। और जी यानी एच यानी कि हाइट या हम इसे कह सकते हैं डेप्थ, जितनी जो है सरफेस से उसकी जो दूरी है बबल की वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके 0.2 ये वैल्यू निकल के आती है। फाइनल सॉल्व से करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंस जो होगा प्रेशर इनसाइड द बबल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का वो होगा 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is the final answer. So hope you understand the explanation. Thank you.